नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को आपन समस्त को स्वागत। आज जो मैराथन रहिबो कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस विषय रे। तो एई मैराथन रो जाउची द्वितीय भाग। प्रथम भाग मु अपलोड कर दी ऑलरेडी। तार जो वीडियो आपन देखियो चाहती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीची, तो डिस्क्रिप्शन में जाई देखि पारिबे। आ एमानकर सबुरो पीडीएफ जदि दरकार ताहाले मोर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु। टेलीग्राम चैनल मध्य डिस्क्रिप्शन लिंक अछि, सेति जाई जॉइन करतु आ मु सेटारे पीडीएफ मध्य प्रोवाइड करतु। तो आज जो मैराथन रहिबो 65 क्वेश्चन लो मैं प्रथमे 1 to 65 जीवा, पुनी रिवीजन भी ताकू 65 करिया। तो जल्दी जल्दी पढ़िबा। तो ता पूर्वरु गोटे रिक्वेस्ट, मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं जल्दी जल्दी वीडियो को बहुत पिलांक सहित बहुत सांगमान सहित शेयर मध्य करंतु। तो बिना देरी न करिके आगो को बढ़िबा। देखिबा आज का कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस विषय कौन कौन क्वेश्चन अच्छी। क्वेश्चन पूरा टोटली मु जो गुडा को सिलेक्टेड नहीं ओनली एग्जाम ओरिएंटेड ऑल इंडिया लेवल एग्जाम और स्पेशली ओएसएससी को प्रिफर करके मु एग्जाम सब क्वेश्चन गुडा को प्रिपेयर करती। तेणु गोटे भी क्वेश्चन को मिस करेंगे। वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु, बहुत मजा आछिबो। क्वेश्चन पैटर्न को देखंतु और वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिया। फर्स्ट क्वेश्चन कौन है? द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ए लैटिन, बी जर्मन, सी फ्रेंच या फिर डी अरबी का जेम्स गॉसलिंग सॉरी इट मिस्टेक लेटर इट जेम्स गॉसलिंग होय पने ठीक अछि। सुन तो अरबी का तो यार आंसर कौन है जो लैटिन वर्ड रू आसुची जो कि कंप्यूटर वर्ड। तो क्वेश्चन सेकंड को जिबा, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस रो फादर किए ए एलन ट्यूरिंग, बी चार्ल्स बाबेज, सी साइमर क्रे या फिर अगस्टा एडमिंग। तो यार उत्तर कौन है जीवो? बी है जीवो चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, ए सीपीयू कंटेन्स ए कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस, बी एन एनालिटिकल इंजन एंड ए कंट्रोल यूनिट या फिर सी ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर डी एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड ए कार्ड रीडर। तो सीपीयू रे कौन कंटेंट था? सीपीयू रे कंटेंट था ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो रखिम आने सीयू एंड एएलयू मध्य कहू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ए यूजर इंटरफेस, बी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सी प्लेटफॉर्म या फिर डी स्क्रीन सेवर। यार उत्तर है जो यूजर इंटरफेस। ए जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। द फास्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड। तो यार उत्तर है जो बी हमर उत्तर है जो मशीन लैंग्वेज को व्यवहार करके प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम जोटा की तैयारी हेतला। तो परवर्ती क्वेश्चन देखिए कौन। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ए नेटवर्क, बी पेरिफेरल या फिर सी एक्सपांशन बोर्ड या फिर डी डिजिटल डिवाइसेस। तो यार उत्तर कौन है जीवो नेटवर्क को व्यवहार करके कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को फैसिलिटेट करा जाए। तो इनफॉरमेशन दुटा कंप्यूटर भितर जो कंप्यूटर और डिवाइस भितर इनफॉरमेशन शेयरिंग नेटवर्क द्वारा होता है। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भितर गोटे कम्युनिकेटिंग मीडिया बने सी होची नेटवर्क। तो परवर्ती क्वेश्चन देखिए कौन। Coded entries which are used to gain access to a computer system are called entry code, password या security commands या फिर डी कोड वर्ड। यार उत्तर है जो बी पासवर्ड। हमें विभिन्न प्रकार कोड को यूज करके पासवर्ड ही बनी था जोटा कि कंप्यूटर को एक्सेस करिया पाई, कंप्यूटर को माने खोलिया पाई किबा कंप्यूटर को लॉक करिया पाई हमें कमांड यूज करू। बहुत गुड़ा को ताकू कोड भी यूज करके हमें गोटे पासवर्ड तैयारी कर पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Which of the following statement is true? Many computer works faster than microcomputer. Microcomputer work faster than mini computer. या फिर speed of both of the computers is the same. या फिर D, the speed of both of these computers cannot be compared with the speed of advanced. तो यार उत्तर है जो a mini computer works faster than microcomputer। जो mini computer microcomputer अधिक जल्दी काम करे। तो क्वेश्चन जीवा। What type of resources is most likely to be shared? Common resources in a computer network, A printers, B speakers, C floppy disk drives या फिर D keyboards। यार उत्तर है जो A printers। परवर्ती क्वेश्चन देखिए कौन। Which device is required for the internet connection? तो इंटरनेट कनेक्शन पे कौन डिवाइस रो व्यवहार करा जाए? जॉयस्टिक, बी मॉडेम या फिर सी सीडी ड्राइव या फिर डी एनआईसी कार्ड ना। यार उत्तर है जो बी मॉडेम को हमें व्यवहार करू इंटरनेट कनेक्शन पाई।
परवर्ती क्वेश्चन देखिवा यूनिवैक UNIVAC इज स्टैंड्स फॉर जोटा कि यार फुल फॉर्म पचारची तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर या फिर सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या उत्तर हो जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जोटा कि ए सहित आम उत्तर जीवा। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा व्हाट इज ए लाइट पेन। लाइट पेन कौन ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस या फिर सी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या फिर डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस यार उत्तर कौन था ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होचे लाइट पेन गोटे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो परवर्ती क्वेश्चन देखिवा IBM 1401 इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या फिर बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर या फिर सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर या फिर डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो या उत्तर हो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि IBM 1401। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन आसला MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट या फिर मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट यार उत्तर कौन है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जेटा कि ए सहित आम उत्तर जीवा। तो ए हो यार उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज 1.40 MB या फिर 1.44 GB या फिर सी 1.40 GB या फिर डी 1.44 MB। तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क रो जो साइज बा कैपेसिटी टा होची सी होची 1.44 MB डी सहित उत्तर जीवा। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यमान को भीतर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो पार्ट कोटा प्रिंटर कीबोर्ड माउस या फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो हम प्रथम रो आलोचना कर सारिछे तर यार उत्तर हो डी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर सी एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर डी एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो यार उत्तर कौन हो यार उत्तर हो ए हो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड ए सहित हम उत्तर जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन अच्छे देखिवा जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड हमको जो बहुत गुड़ाक इमेल आसे से जंक होकी थाए जो कौ जगह रखी माने स्टोर होकर कौन कहती ए स्पैम या फिर बी स्पूफ या फिर सी स्निपर स्क्रिप्ट या फिर डी स्पूल यार उत्तर बहुत समस्त जानी या हूँ स्पैम। स्पैम रे जाकि बहुत गुड़ाक इमेल जाकि स्टोर होकर कहते स्पैम जंक इमेल को। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा what type of computers are client computer most of the time in a client server system। तो ए मेन फ्रेम बी मिनी कंप्यूटर या फिर सी माइक्रो कंप्यूटर या फिर डी PDM। तो यार उत्तर हो आमर माइक्रो कंप्यूटर जोटा कि बहुत समय मोस्ट ऑफ द टाइम जोटा कि इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम भाया काम करे। नेक्स्ट कंप्यूटर देखिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंप्यूटर ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए डबल स्पेस बी लाइन स्पेसिंग सी सिंगल स्पेस या फिर डी वर्टिकल स्पेसिंग। तो यार उत्तर हो लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज एम्प्लॉय एड्रेस एग्जामिनेशन स्कोर सी बैंक बैलेंस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एथिरे कुछ एग्जांपल नॉन न्यूमेरिक डाटा जोटा कि नंबर्स यूज हुए नहीं। तो सेटा कौन डाटा सेटा होची एम्प्लॉय एड्रेस नंबर यूज हुए नहीं एम्प्लॉय एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम द प्रोग्राम व्हिच अराइव्स बाय बीइंग wrapped in the box या फिर बी द प्रोग्राम व्हिच इज परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर या फिर सी द कंप्यूटर व्हिच इज द पार्ट ऑफ ए बिग कंप्यूटर या फिर डी द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। तो एम्बेडेड सिस्टम कहा को कहा जाए व्हाट इज द एम्बेडेड सिस्टम। तो यार उत्तर जो है द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द मशीन। तो ये है हमारा डी उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स। तो टाइप्ड कैरेक्टर रो अपीयरेंस कोठु हमें डिफाइन करू साइज फॉर्मेट पॉइंट या फिर कलर यार उत्तर है बी फॉर्मेट। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा व्हेन ए फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्रथम थोड़ा पे जतले फाइल को सेव कर जाए तो तार कौन नीड थाए देखियो एथिरे एक कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड या फिर बी इट इज मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट या फिर सी इट डज नॉट नीड ए नेम या फिर डी इट ओनली नीड्स ए नेम इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड।
तो प्रथम जो फाइल को सेव करे तार प्रथम कौन दरकार तार गोटे परिचय दरकार तो तेणु तार गोटे नाम रहा दरकार बी है उत्तर इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई। तो परवर्ती क्वेश्चन ऑफिस लैंड्स व्हिच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट। तो ऑफिस लैंड को स्कैटर्ड करने जियोग्राफिकली तो कौन जो कि नेटवर्क को यूज कर जाए देखिए CAN कैन या फिर DBLAN LAN C DAN DAN या फिर DWAN 1। तो ये उत्तर आम रही WAN 1 D से दिया। परवर्ती क्वेश्चन देखिए where are the data and program stored when the processor uses them। तो डाटा कौन स्टोर हुए जो प्रोसेसर यूज करे से स्टोर करने मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी। तो यार उत्तर हो कौन ए मेन मेमोरी रे जाके डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर होकर रुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रिप्रेजेंट्स रो ऑफ एक्स व्हेयर एज डैश इज द डाटा मेड मीनिंगफुल। तो इन्फॉर्मेशन या रिपोर्टिंग या फिर डाटा इन्फॉर्मेशन बिट्स या फिर डी रिकॉर्ड्स बाइट्स। यार उत्तर है जो बी डाटा रिप्रेजेंट्स रो ऑफ एक्स व्हेयर एज इन्फॉर्मेशन इज डाटा मेड मीनिंगफुल। तो यार उत्तर बी से दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए what do you call the program that are used to find out possible faults and their causes। operating system extension cookies diagnostic software या फिर boot diskette। तो यह उत्तर हमें सी सहित जीवा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए which प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चन माने ऑप्शंस दिया है ता भितर लो लेवल लैंग्वेज कोनटा ए बेसिक कोबल फॉर्टन या फिर बी प्रोलॉन्ग या फिर सी सी प्लस प्लस या फिर डी असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज होची असेंबली लैंग्वेज दैट इज डी उत्तर है जो। परवर्ती क्वेश्चन हो द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो नॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोनटा NAV या फिर F-Prot या फिर ओरेकल या फिर डी जोटा कि मार्कअप है। तो हमारा उत्तर सी है जो ओरेकल जोटा कि उठे नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। DMS रो फुल फॉर्म कोन डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो यार उत्तर बी सहित जीवा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। परवर्ती क्वेश्चन देखिए ए नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा 680 KB 680 बाइट्स या फिर 680 MB या फिर डी 680 GB। तो यार उत्तर सी है जो कि 680 मेगाबाइट रो डाटा होची गोटे CD-ROM यूजुअली स्टोर करि परिबो। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा MIS is designed to provide information needed for effective decision making by consumers workers foremen या फिर managers। तो यह उत्तर है जो मैनेजर। परवर्ती क्वेश्चन देखिवा ASCII stands for American Stable Code for International Interchange B American Standard Case for International Interchange या फिर C अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या फिर डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो यार उत्तर सी से जीवो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII रो जो कि फुल फॉर्म। परवर्ती क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर EDSAC IBM 1401 CDC 1601 या फिर ICL 2900। तो EDSAC जे की फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो ए उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन फॉर्टन इज ए फाइल ट्रांसलेशन फॉर्मेट ट्रांसलेशन फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फिर डी फ्लॉपी ट्रांसलेशन। यार उत्तर है जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन सी उत्तर है जो। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट OCR OMR MICF या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ये है जो OCR ए उत्तर है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर इंच डॉट पर स्क्वायर इंच फिर डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या फिर ऑल ऑफ द एबव। यार उत्तर कौन है जो बी है जो उत्तर डॉट पर स्क्वायर इंच। परवर्ती क्वेश्चन देखिए इन एनालॉग कंप्यूटर इन एनालॉग कंप्यूटर कौन होता है देखिए ए इनपुट is fast converted to digital form input is never converted to digital form या फिर C output is displayed in digital form या फिर D all of the above। तर यह उत्तर है जो जोंटा कि B input never converted to digital form। तो परवर्ती क्वेश्चन देखिए in latest generation computer the instruction are executed parallel only sequentially only
both sequentially and parallel या फिर D all of the above यार उत्तर है जो both sequentially and parallel C है जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देखिए who invented the high level language C तो हाई लेवल लैंग्वेज जो C होची ताकू किए होची इन्वेंट करते हैं डेनिस एम रिची या फिर B निकोलस रीथ या फिर C सेमर पॉपट या फिर D डोनाल्ड कुंट तो यार उत्तर ए सहित आम जा डेनिस एम रिची जे कि हाई लेवल लैंग्वेज C रो उद्भावन करते परवर्ती क्वेश्चन देखिए पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू कंसोल ऑपरेटर प्रोग्रामर डिप्लॉयर या फिर सिस्टम एनालिस्ट तो यार उत्तर है सिस्टम एनालिस्ट डी है जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर टू एज होमोसेपियंस तो मनीष को कौन कह जाए जो होमोसेपियन कह जाए से भाया व्हिच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस से भाया सिलिको सेपियंस क्या कह जाए ए मॉनिटर बी हार्डवेयर सी रोबोट या फिर डी कंप्यूटर यार उत्तर कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर को सिलिको सेपियन कह जाए एंड ह्यूमन को होमोसेपियन कह जाए मन रखिथे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग What is the alternative computer jargon for it? तो A lease, B squid या फिर C slug या फिर D glitch तो यह उत्तर D है जो glitch परवर्ती क्वेश्चन मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट ए फास्ट B पावरफुल C इनफैलेबल या फिर D चीप तो यह उत्तर है जो कौन C इनफैलेबल तो मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट नॉट इनफैलेबल नेक्स्ट क्वेश्चन What is the name of the displayed feature that highlights are of the screen where requires operator attention? A pixel, reverse video, C touch screen या फिर D cursor तो यह उत्तर कौन है जो B reverse video तो परवर्ती क्वेश्चन देखिए कौन The system unit of a personal computer typically contains all of the following except microprocessor, disk controller, serial interface, D modem या उत्तर है जो D modem परवर्ती क्वेश्चन a computer program that converts an entire program into machine language is called a interpreter B simulator या फिर C compiler या फिर D commander यदि मैं दुईटा क्वेश्चन डिस्कशन करी तो ये भल लगी मन रखिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम गोटे कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स जोटा कि कन्वर्ट करे एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज पूरा प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज रे कन्वर्ट करे ताकू कोन कह जाए ताकू कहती कंपाइलर तो 48 रो आंसर जे हे जीवो सी हे जीवो कंपाइलर तो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा सेटरे कोन अछि आ गुटे तो एठी आ गुटे क्वेश्चन केला ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सेठी कन्वर्ट कर दिला बट एठी ट्रांसलेट करछि वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज ये भी से मशीन लैंग्वेज को करछि बाकी एठी कोन करछि से एठी कन्वर्ट करथिला बट एठी ये ट्रांसलेट करछि तो मशीन लैंग्वेज ताकू कोन कह जाय ताकू कहती इंटरप्रेटर तो या कंफ्यूज हेबेनी कन्वर्ट करबा को कोन कह जाय कंपाइलर बट ट्रांसलेट करबा को इंटरप्रेटर तो उत्तर है जो ए परवर्ती क्वेश्चन को जीवा तो क्वेश्चन ए कंप्यूटर तो से क्वेश्चन रिपीट है तो ए जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देखा ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू ए वायरस व्हिच वाज टेकन फ्रॉम ए 1970 साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन बर्नर एंटाइटल्ड द शॉकवेव राइडर इज तो कौन कह जाए ए बग ए वाइस ए लाइस और डी वर्म तो यार उत्तर कौन है जो वर्म 51 लो उत्तर डी जीवो वर्म ए स्टैटिक इज ए बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज ए मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप लॉजिक गेट्स या फिर लैटेंट तो यार उत्तर कौन है जीवो फ्लिप फ्लॉप बी सहित जीवा परवर्ती क्वेश्चन ओ डैश इज एन उप प्रिंसिपल कहा कह जाए स्ट्रक्चर प्रोग्राम ये बी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग या फिर सी इनहेरिटेंस या फिर डी लिंकिंग तो यार उत्तर इनहेरिटेंस इज एन ओप प्रिंसिपल परवर्ती क्वेश्चन कबल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन इज कबल को कोठी वाइडली बहुत भाव में व्यवहार करा जाए कमर्शियली साइंटिफिक स्पेस या फिर मैथमेटिकल तो यार उत्तर है जो कमर्शियली कबल को बहुत जगह यूज करा जाए कबल इज ए हाई लेवल लैंग्वेज परवर्ती क्वेश्चन द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड मॉडेम मल्टीप्लेक्सर मॉड्यूलेटर या फिर डी मॉड्यूलेटर यार उत्तर है जो A modem. परवर्ती क्वेश्चन the instruction that tells a computer how to carry out the processing task are referred to as a computer programs, processor, input device या फिर memory modules. तो यार उत्तर है जो कौन programs. परवर्ती क्वेश्चन in area of computer that temporarily holds data waiting to be processed is CPU, memory, storage या फिर file. तो यार उत्तर है जो D file.
परवर्ती क्वेश्चन dash is the key to close a selected drop down list, cancel a command and close a dialog box. तो कौन की को आमे यूज करू या पई कैंसिल कोटा कमांड को कैंसिल करिया पई बा डायलॉग बॉक्स को क्लोज करिया पई ए टैब बी शिफ्ट सी एस्केप एफ डी F10 हमरा उत्तर हो जिवो एस्केप सी हो जिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन dash is the key we use to run selected command. गोटे सिलेक्ट कमांड को आमे जदी रन करिया चाहे तले हम को की व्यवहार करू ए शिफ्ट बी टैब या फिर सी एंटर या फिर डी कंट्रोल. तो हम उत्तर हो जिवो सी एंटर आमे दबु कौन से भी कमांड लिखला पर हमें एंटर ही दबु ताको रन करिया पई. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा dash is the functional key to display save as box. तो आमे कौन सी फाइल को जदी सेव करिया चाहू तो सेव कले तो कंट्रोल एस कर देले सेव हे जो बाकी किंतु कोन जागा रे सेव करिया चाहू ता पई कोन स्पेशल की अछि F5 F6 F9 फिर F12 तारा उत्तर हे जो F12 डी उत्तर. परवर्ती क्वेश्चन data becomes dense when it is presented in a format that people can understand and use. डाटा को कोउ प्रोसेस रे रखिले सेटा को जने लोक कोन करिवो ताको भलो बारे बुझी पाइबो प्रेजेंटेड कहि होई परिबो. तो देखिवा ए प्रोसेस बी ग्राफ फिर सी इंफॉर्मेशन फिर डी प्रेजेंटेशन. आमे जदि ताको प्रेजेंटेशन रे रखिबा ताले ताको बुझिबा और यूज करिबा बहुत सरल हे जिवो तो डी हे जो उत्तर. परवर्ती क्वेश्चन द टर्म dash designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. A digital device, B system add-on, फिर C disk pack, फिर D peripheral devices. तो यार उत्तर है जो peripheral devices D उत्तर. परवर्ती क्वेश्चन ए dash is a microprocessor based computing device. तो माइक्रोप्रोसेसर को बेस करके गोटे कंप्यूटिंग डिवाइस नाम कोन पर्सनल कंप्यूटर. बी मेनफ्रेम कंप्यूटर. सी वर्कस्टेशन या फिर डी सर्वर. या उत्तर है जो पर्सनल कंप्यूटर जो देखो पीसी को. नेक्स्ट क्वेश्चन RAM can be treated as the dash for computers processor a factory. B operating room. C waiting room या फिर D planning room. तो यह उत्तर है जो C waiting room. परवर्ती क्वेश्चन एवं इस स्लाइड लास्ट क्वेश्चन टू मूव ए कॉपी और फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर, फाइल एनक्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन, फाइल कॉपिंग. तो यह उत्तर है जो फाइल ट्रांसफर. तो ये जो क्वेश्चन 65 क्वेश्चन को डिस्कशन करली ए क्वेश्चन टिके एडवांस वर्जन अछि. सबु क्वेश्चन बा वीडियो रे आपण माने देखिथिबे नॉर्मल क्वेश्चन पचारचंती रैम रो स्टैंड्स फॉर कोन, रोम स्टैंड्स फॉर कोन, हार्ड डिस्क रो काम कोन, इनपुट डिवाइस रो काम कोन. बट सेही क्वेश्चन को टिके बुले के आज काली का जो कंपटीशन एते टफ हो गलानी ते क्वेश्चन को से टिके बुले के पचारछि. तेणु सेही टाइप रे क्वेश्चन को प्रिपेयर करछि. तेणु आपण ए क्वेश्चन को बहुत भल भाबरे पढंतु, आकु मने रखंतु. मु रिवाइज पुनी करबी. देखो ये गोटे देखी आमको मूव एंड कॉपी आम मूव करने कौन करूँ कट एंड पेस्ट, कॉपी करने कॉपी एंड पेस्ट करूँ. बट से क्वेश्चन को से दुटा को मिसेक गोटे क्वेश्चन एग्जांपल नहीं तो से देखो फाइल ट्रांसफर तार उत्तर आसे कम्युनिकेशन करने. तो ये क्वेश्चन को कौन करना ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम आसी. बट तो आम कौन कर ना से कट पेस्ट या फिर से ऑप्शन थे पेस्ट करके चले आस. बट क्वेश्चन को भल कि पढ़ुन. तेणु करके क्वेश्चन को भल को पढ़ आ तार उत्तर खोजा चेष्टा कर. तो चलतु पुणी रिवाइज रे जिबा कौन कौन क्वेश्चन आमे डिस्कशन करथिले. रैम कैन बी ट्रीटेड एज द dash for the computer processor. तो वेटिंग रूम यार उत्तर है जिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन 63 ए dash is a microprocessor based computing devices. तो माइक्रोप्रोसेसर व्यवहार करी कोनटा गोटे कंप्यूटिंग डिवाइस दैट इज पर्सनल कंप्यूटर. परवर्ती क्वेश्चन द टर्म dash designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. तो पेरिफेरल डिवाइस डी है जो उत्तर. Data becomes dash when it is presented in a format that people can understand and use. तो प्रेजेंटेशन फॉर्म में रहिले याकू बुझिबा और यूज करिया सहज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा dash is the functional key to display save as box. तो F12 है जो. नेक्स्ट क्वेश्चन dash is the key we use run the selected command that is enter. नेक्स्ट क्वेश्चन dash is the key to close a selected drop down list, cancel a command and close a dialog box that is escape key. Next question, an area of a computer that temporarily holds data waiting to be processed is a file. Next question, the instructions that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as a computer program, processor, input device, modules. तार उत्तर है जो a programs. Next question, the device used to carry digital data on an analog line is called that is modem. Next question. Next question jiba COBOL is widely used in application of commercial use. Next question dash is an OOP principle inheritance is an OOP principle
A state is a bistable electronic circuit that has flip-flop. B उत्तर. Next question, a self-replicating program similar to a virus which was taken from a 1970 science fiction novel by John Bruner entitled The Shockwave Rider is counter war. Next question, a computer program that translates one program instruction at a time into a machine language is called interpreter. तो ये क्वेश्चन पुणी रिपीट होता तो इंटरप्रिटर यार भी उत्तर तो बट जिते कन्वर्ट करुचे कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड दैट इज कंपाइलर. परवर्ती क्वेश्चन, द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर typically contains all of the following except counter only except modem. Next question, what is the name of the display feature that highlights are of the screen which requires operators attention, that is reverse video. Next question, modem computers are very reliable but that are not infallible. Next question, an error in software or hardware is called a bug. What is the alternative computer jargon for it? Glitch. D is your उत्तर. Human beings are referred to as Homosapiens whose device is called Sillico Sapiens. Sillico Sapiens computer को कहते हैं. Next question, personnel who design, program, operate and maintain computer equipment refers to system analyst. D is your उत्तर. परवर्ती क्वेश्चन, who invented the high level language C? Dennis M. Ritchie. परवर्ती क्वेश्चन, in latest generation computer the instructions are executed both sequentially and parallelly. Next, in analog computer input is never converted to digital form. परवर्ती क्वेश्चन, the output quality of a printer is measured by dot per square inch. Next question, which of the following devices can be sewed to directly image printed text, that is OCR. Next question, photon is a formula translation. Next question, which of the following is the first generation computer, that is EDSAC. A is your उत्तर. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange, that is C answer. Next question, MIS is designed to provide information needed for effective decision making by manager. Next question, a non-mark CD-ROM usually can store up to 680 MB. उत्तर है जो 680 MB. Next question, what does DMA stands for? DMA stands for direct memory access, that is B answer. What is the following is not anti-virus software, that is Oracle. C उत्तर है जो. परवर्ती question, which programming language are classified as low-level language, that is assembly language. Next question, what do you call the program that are used to find out possible faults and their causes? So that is diagnostic software. Next question, dash represent raw facts whereas dash is data made meaningful. Data and information यार उत्तर है जो. 26 number question, where data and program stored when the processor uses them. तो data और program जो processor use करे तो कौन store करिए, that is main memory. Next question, office lands which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate, that is WAN. WAN. Next question, when file is saved for the first time it should have a name to identify it. So B is your उत्तर. So 23rd, dash is the appearance of type characters. Format is the appearance. Next question, what is embedded system? The program which is permanent part of the computer. That is the answer. No, that is answer is D, the computer and software system that control the machine. Next question, example of non-numeric data. Non-numeric data, that is employee address. Next question, the amount of vertical space between lines of the text in a document is called line spacing. Next question, what type of computers are clients in a client server system? That is C, microcomputer. Next question, junk email is also called spam. Parvati question, ABCDIC stands for extended binary coded decimal interchange code. Next question, which of the following is a part of central processing unit? That is arithmetic and logic unit. Next, the capacity of 3.5 inch floppy disk is 1.44 MB. Next question, MSI stands for medium scale इंटेलिजेंट सर्किट या फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 1401 इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. परवर्ती क्वेश्चन, व्हाट इज ए लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस? यूनिफाइव इज स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? दैट इज मॉडेम इज नीडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप ऑफ
resources is most likely to be shared common resource in a computer network, that is printers. Next question. Which of the following statement is true? Mini computer works faster than microcomputer. Next question. Coded entries which are used to gain access to computer system are called passwords. B is the answer. Next question. This is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing device, that is network. Next question. The first computers were programmed using machine language को व्यवहार करके यूज होता है. The which of the following controls the process of interaction between the user and operating system, that is user interface. Next question. A CPU contains an arithmetic logic unit and L card reader. No, sorry. That is not answer. C. A control unit and an arithmetic logic unit. So next question. Who is the father of computer? That's Charles Babbage. And the term computer is derived from Latin word. तो आज का मैराथन लो इतने क्वेश्चन. तो थैंक यू फॉर वाचिंग. वीडियो को बहुत जल्दी ज्यादा शेयर करंतु. मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु. पीडीएफ पाई मु पूर्व कहि सारछि. मोर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु. थैंक यू फॉर वाचिंग. देखाओ पुणी.